Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? I think I am. Yes. So, technically, everything seems to be fine. And अब चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं what exactly is happening around the world. So, again, I'm using this word. Technically, I'm not supposed to use this word. But yes, जो इसराइल है उसने लेबनान में एक नया जेनोसाइड जो है वो शुरू कर दिया है. Yes. Hello, Krishna. Mm. So, why this particular thing is happening? Because from last 2 days, there are 400 people who died. There are almost 250,000 people, that is 2.5 lakh people. Mm, my friend rupee at 93, not 93, the 93.61. फ्रंट पेज की न्यूज़ है 71 सॉरी फ्रंट पेज की न्यूज़ है भाई माय फ्रेंड ये देख लो यस सो लेट्स स्टार्ट विथ वी आर हैविंग like 93.71 rupees. Okay, so there was this particular video about it, which was servicing of our Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat and he was the Prime Ministerial candidate of Bharatiya Janata Party in 2014. जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय रुपया जो है वो पतला होता जा रहा है, राइट? द one of my uh, friend who's an expert in politics, right? And he's like much older than me. He's in 60s. So he says ki, the Chief Minister Modi has all the solution for India's problem, while Prime Minister Modi doesn't have any solution. So वो एक तरीके से दिखना शुरू हो गया है. Okay, let's get into the point. So Israel is stepping into another genocide, that is Lebanon. Yes, दिस इज अ हार्श वर्ड टू यूज, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल वर्ड टू यूज, बट ये सच्चाई है जो दिखना शुरू हो गई है. पैटर्न है. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से वो गाजा, वो वेस्ट बैंक, राइट, वो लेबनान, every single place has seen what we get similar sort of pattern. It's not thinning, it Indian rupees got evaporated. So दक्ष है तो सही, अब क्या कर सकते हैं. पेट्रोल प्राइस भी बढ़ रहा है. सोच लो, even if like in between the election there is a rise in petrol fuel price, then सोच लो कितनी बुरी crisis होगी which people are actually trying to hide. But क्या ठीक है, पॉइंट पे आते हैं. सो इस पे अपन डिस्कस करेंगे हाउ लेबनान इज बिकमिंग अनदर गाजा, राइट. एंड फिर उसके बाद जो न्यूज़ है अपने पास अपने उसमें, सो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट तो कंटिन्यू है. या the way yesterday videos were surfacing, and how F-35 was struck down by Iran. That F-35, just later up कहता था, even if he's standing like beside the enemy, they won't recognize it. राइट, तो ये कहीं ना कहीं अब आ गया सामने कि भाई दैट इज द लॉ, दैट इज द फ्लॉ. ईरान के पास जितने भी छोटे मोटे वेपन्स हैं, दे टारगेटेड इट बाय द ड्रोन, ऐसा खबर आ रहा. एंड दे एक्सेप्टेड द हीट सिग्नेचर, दे कैप्चर्ड द हीट सिग्नेचर ऑफ द F-35. तो ये एक बड़ा न्यूज था. जो F-35 बनाने वाली कंपनी है, राइट, उसके शेयर्स जो है वो 2% डाउन हो गए थे डायरेक्टली आफ्टर द न्यूज. दो अमेरिकन ट्राइड टू कवर इट अप कि नहीं भैया वो डैमेज नहीं हुआ, उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ, दैट इज landed safely. But the reason it was strike, right, वहां पे Chinook helicopter, which are like rescue helicopters, वहां पे वो उड़ते हुए देखे गए. तो है काफी कुछ चीजें हैं उसमें. खैर, थोड़ा सा कुछ न्यूज में बात कर लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. सो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन. इसमें कोई वो नहीं है. मैंने तुम्हें बताया कि लेबनान जो है एक अनदर जेनोसाइडल एक्ट में जाने वाला है. इसराइल जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, इसराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है, ठीक है. दैट वाज समथिंग जो हो रहा है. फिर हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं,
उनके लिए उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक बिल लाया गया था 2023, राइट। सो उसको चैलेंज किया गया था एक पिटीशन के थ्रू इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि भाई मैं इस केस का पार्ट नहीं रहूंगा। सो ही रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बेंच। लोग उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। द थिंग इज कि इट वाज सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर in which the committee, high-powered committee that was supposed to select the chief election commissioner and other election commissioner, it was supposed to have a chief justice of India, the prime minister and leader of opposition. But the new law said it will have a prime minister, a cabinet minister, and leader of opposition. So technically, the government hold the majority directly in that particular committee as well. तो सीजीआई ने उस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट जो पिटीशन था उसको सुनने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आई वोंट बी पार्ट ऑफ इट, राइट। यस, तो ये एक न्यूज थी। फिर अभी जो आर्टिकल 164, हाँ दैट इज, मतलब 164(4), इसके थ्रू कहा जा रहा है कि सीएम जो नीतीश कुमार है, ही विल बी सीएम फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एज वेल। सो अगले 6 महीने के लिए सीएम बने रह सकते हैं नीतीश कुमार। दैट इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द मिनिस्टर श्रवण कुमार फ्रॉम द बिहार, right? He simply said Nitish Kumar can remain CM for 6 months despite being elected for the Rajya Sabha as per the constitution allowance for non legislators. तो इन्होंने ये भी बात बोली कि ये चीज होगी, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो अडॉप्टिव मदर्स हैं उनके राइट के लिए भी बात करी है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट अडॉप्टिव मदर्स आर एंटाइटल्ड to 12-week paid maternity leave regardless of the child's age, recognizing adoption as an expression of reproductive autonomy. So जो adoption rules हैं उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने को कहा। दे सेड कि इवन इफ द मदर इज अडॉप्टिंग मदर, उनको जो 12 वीक्स का या 3 मंथ्स का मैटरनिटी बेनिफिट है, दैट इज सपोज टू बी गिवन। एंड बिकॉज उनके पास एक अडॉप्टिव यानी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है। और डिस्पाइट ऑफ द एज ऑफ द किड, आप जिस भी एज के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो आपको वो मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। फिर आज एक डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है सीएपीएफ बिल, जिसको हम अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे, राइट। लास्ट ईयर ही आया हुआ है, तो उसमें क्या है क्या नहीं है। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रोक्सीमेट 300 जो बेटिंग एप्स है उसको बैन किया हुआ है। सो दैट क्लियरली मींस कि इस बार आईपीएल के सबसे शानदार खिलाड़ी लोग नहीं खेलेंगे, ठीक है। ओके। ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो फिर से न्यूज में रहा है कि क्या है क्या नहीं है। Great Nicobar's tribal leaders are protesting for that mega infrastructure project, which is alleging encroachment of the ancestral tribal land. तो उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया। वी हैड डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, what are the diplomatic important, what are the technical important, and how it's going to harm the environment and the local tribal population, etc., etc. राइट। एंड फिर आज हमारे यहाँ ईद है, यस और नो? यस, ईद उल फितर, दैट इज व्हाट बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। एंड ये तीसरी ईद होगी टेक्निकली इन विच आई एम सीइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। एंड around the world where one particular country, Israel, is again attacking on Gaza, West Bank, Lebanon, Iran, मतलब ये चीजें जो है वो गलत है। आई मीन द वे थिंग्स आर हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 years, इसका आज एक काला चिट्ठा अपन खोलेंगे तब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। खैर, लेट्स स्टार्ट विद द लेबनान इशू। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट बट एक्चुअली वी शुड टॉक अबाउट इट, है ना। जस्ट अ मिनट। इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूज में नहीं आ रहा है, लेबनान इशू। ओके, सो देयर वाज अ टाइम व्हेन हिटलर हैड concentration camps, yeah, right, and it was a secret concentration camp,
Hitler called this concentration camp method to eliminate the Jews as the final solution. Okay, and these Jews, again, I don't have problem with all the people, but I have problem with the Israeli leadership because these people have faced such kind of a massacre, such kind of genocidal intentions before this particular day. They are doing the same thing with other people. India aid to Kabul, but sir, why are we providing help there? Actually, we should provide help at like all the places जहाँ पे भी possible हो. काबुल अफगानिस्तान इज अ प्लेस जहाँ पे जहाँ से हम ट्रेड भी करते हैं एंड इट्स अ डिप्लोमेटिक एलाय क्योंकि हमारा जो दूसरा प्यारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो ये एक वो व्हाट वी कैन से काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक स्टैंड है एंड काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टैंड है कि पाकिस्तान को ये रहे कि दे आर फ्रेंड्स खैर लेट्स कम बैक टू लेबनान सो 2 साल पहले 2.5 साल पहले हमने गाजा देखा है ना गाजा के बाद गाजा के पैरेलली हम वेस्ट बैंक देख ही रहे थे आज भी देखते हैं आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू आर involved into proper news or information business but I have like on the daily basis like 2-3 दिन में एक बार कोई ऐसा critical video I see in Twitter or any place जहाँ पे जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे जो settlers हैं these settlers are Israeli Jew they attacked on some Palestinian house they dragged them out, they beat them, they put the slogan ki get out from our holy land, get out from our promised land kind of thing. गाजा में जो हुआ उसको बताने की जरूरत नहीं है राइट गाजा का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज है लगभग आई एम नॉट टेलिंग यू फ्रॉम माय नंबर्स राइट दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम यूएन एंड लोकल न्यूज रिपोर्टर्स approximate 3,000 facilities which are strictly civilian whether that is school hospitals media houses, UN facilities, they are being destroyed in the Gaza, and they killed approximately 260 Palestinian journalists. Overall, 325 journalists in the Gaza from last 2 years, and this number is more than the journalists died in the World War time. So अकेले इसराइल ने उन numbers को surpass कर दिया. They killed approximate 73,000, 74,000 civilians in Gaza, out of which approximate 30% were children, right? And nobody is talking about it. The Israelis and Israeli Defense Forces are calling it as a what we can say human shield. जो local terrorist group है whether that is Hamas or Hezbollah they calling it कि these people were the human shield of these terrorist group but they forget कि हमास को बनाए रखने के लिए यही बेंजामिन नेतन्याहू है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के रन में उनको पैसे देने गया था because they were not agree to accept the Palestinian authorities. Palestinian authorities were the peaceful and accepted so उनको काउंटर करने के लिए और इस मैटर को रेडी रखने के लिए ये आदमी पैसे देने गया था they were the one who actually created kind of Hamas. So 74,000 people have already died in Gaza and एक रिपोर्ट कहती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस 74,000 में अप्रोक्सीमेट 15,000 ऐसे लोग थे जो भूखमरी के कारण स्टार्वेशन के कारण और because of lack of a medical aid they died and it's a kind of war crime. Now let's come to Lebanon. What is happening in Lebanon? Nobody's talking, but we should actually talk about it. First of all, approximate 250,000 people are living on a tent. Yes, southern Lebanon, में southern Beirut वाले area में, they are attacking on the regular basis. They have now started the ground invasion. And people living over there, they left their home and now they are forcefully living on tents. I have seen a video where a press reporter is reporting and उसके बगल में जाके मिसाइल गिरी है. I've seen videos that all the bridges which are connecting the southern Lebanon and Beirut, all the bridges are being destroyed so that nobody can help them. Right? So the kind of thing that happened in Gaza, it already started in the Lebanon. From last 2 days, approximate 400 people have already died. है ना? Out of which I guess some 45, 50 were children. Right? They have destroyed a hospital. They have destroyed schools.
They have destroyed the civilian facilities. ये इजराइल का एक रेगुलर पैटर्न रहा है. They are doing it. Now, talking about other things, so they are using the white phosphorus. Yes, white phosphorus is a banned chemical under the Geneva Convention. United Nations इस particular chemical के use को crime against humanity and war crime मानता है. And these chemicals are being used in the civilian area. So होता ये है कि जब आप व्हाइट फोस्फोरस फेंकते हो तो वो as soon as it came into the contact with the oxygen, it start burning. It also like get absorbed within the skin. So अंदर भी जो जलन है, जो दूसरी चीजें वो कंटिन्यू रहती है. It's a banned substance that is not something to be used in any weapon as form of weapon or like as form of torture. So the Israelis are using it, and they are shielding their attacks and other thing on the name of Hezbollah. This is the same Israel which can make a precise attack on the Iranian leadership, Iranian scientists, Iranian nuclear facilities, but they don't know where Hezbollah is, so that's why they are killing it. Similar sort of argument they have given for the Hamas. They wanted to kill Hamas, but they killed 74,000 people. Hamas was just like a number of 300 to 400 Hamas fighters. So there is another particular concerned genocidal activities going on in Lebanon. Lebanon doesn't have a strong army. Lebanon kind of doesn't even have a kind of standing army the way they have numbers. So they don't have a particular what we can say resources to fight. But again, this is something which is happening. And जो मेरे वो थे मतलब एक मैंने वीडियो देखा, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी, तो वहां पे एक एक्सपर्ट ने सिंपली बोला था कि द हिटलर डिड इट वाइल सीक्रेसी. उसे जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए वो सीक्रेट थे. वाइल जो गाजा है, जो लेबनान है, दे आर बिकमिंग द ओपन कंसंट्रेशन कैंप, नोबडी टॉकिंग. राइट. यस, दैट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस. मतलब एक बच्चों को मार देना है ना, दूसरी चीजों को वो कर देना, तो दैट इज समथिंग जो कि गलत दिखता है. सो लेबनान में जो हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए. आरएम बैच में लिटरल रीजनिंग की क्लास करूंगी वेरी सून बसन, वेरी सून, है ना. बनन बनाना लंडन, ओके, जो भी है. तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे बात करनी चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली डिस्कस अबाउट इट कि हाउ दे आर डूइंग इट. व्हेन यू हैव इनफ टेक्नोलॉजी टू मेक अ प्रिसाइज डिसीजन लाइक precision attack on supreme leader, precision attack on the different places, then why you are not getting the Hezbollah and Hamas directly? Why you are killing the civilians? So लेबनान का जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको आपको देखना पड़ेगा. एक और रिपोर्ट जो मैंने रिसेंटली वो की गो थ्रू किया, उसमें ये है कि इजराइल है ना, इन दिस पर्टिकुलर डिकेड अलोन अगर मैं बात करूं 2022 से 2021 से 2026 के बीच में, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 6 मिलियन डिस्प्लेसमेंट. मतलब इसराइल के कारण लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया या उनके घर टूट गए हैं. आइदर दे डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे आर फोर्स्ड टू लिव ऑन कैंप्स. राइट. तो इसराइल कहीं ना कहीं इस इसराइल के इस पर्टिकुलर थिंग को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए. जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दे मेंशन कि हमने वारंट जारी कर दिया बट नोबडी इज एक्टिंग ऑन इट. तो ये चीजें जो हैं ये गलत है, एंड दिस इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए. तो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट में एक और पर्टिकुलर जेनोसाइडल एंट्री हो चुकी है, दैट इज ऑफ लेबनान. थोड़ा सा समझ लेना कि लेबनान में क्या हो रहा है, इसके बारे में न्यूज पढ़ के रखना, बिकॉज दीज आर द थिंग दैट एक्चुअली हर्ट्स. लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट कि क्या उसमें वो आए हैं अपडेट्स हैं. तो सबसे पहले बात करें तो वी ऑलरेडी एंटर्ड ऑन द 21st डे, है ना. 21st डे एक्चुअली एंड हो गया, वी काइंड ऑफ एंटर्ड फॉर आवर इंफॉर्मेशन 22nd डे. सो 22 दिन हो गए भाई साहब. एंड अब क्या क्या चीजें हुई हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मिलिट्री डेवलपमेंट दैट हैपन. सो मिलिट्री डेवलपमेंट में जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है डिएगो गार्सिया. Yes, Iran launched two intermediate range ballistic missiles targeting the joint US UK military base in the Diego Garcia in the Indian Ocean. So, ये जो यूके का यूएस का जॉइंट बेस था, यहाँ से पर्टिकुलर ऑपरेशंस जो है वो हो रहे थे. प्लेन्स जो है वो उड़ के ईरान के एयर स्पेस में अटैक कर रहे थे.
तो Iran has attacked with the two intermediate range ballistic missiles. So now Diego Garcia and Indian Ocean also had kind of tasted the taste of battlefield. So now it's also become the battlefield. Indian Ocean का जो वो है क्या कहना चाहिए बेस है उसमें उन्होंने अटैक किया है सेकंड ईरान क्लेम्स टू डिस्ट्रॉय एन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे नियरली इनविंसिबल काइंड ऑफ फाइटर जेट बोला जाता था कि ये ना तो रेडार के पकड़ में आएगा ना कुछ आएगा सो Iranian have published a video in which they said कि we captured the heat signature of that particular plane and we hit it with a drone and it was destroyed. While America's claim is it was not destroyed, it was damaged and landed safely on the Saudi Arabian base, right? But the place where this attack happened, the Chinook helicopters can be seen wandering around there. Chinook helicopter from the Americas is a helicopter जो use होते हैं rescue missions के लिए किसके लिए use होते हैं rescue missions के लिए use होते हैं तो there are chances that pilot is being injured and they are rescuing that particular pilot. Then मैंने तुम्हें अभी लेबनान के बारे में बताया तो Israel offense in Beirut, right? ये एक नया डेवलपमेंट है तो इजरायली मिलिट्री कंडक्टेड अ वेव ऑफ स्ट्राइक on Hezbollah target in Beirut, Lebanon, following the evacuation warning for the resident in the southern suburbs. तो बेरूत में उन्होंने वेव ऑफ स्ट्राइक करी हुई है अब मैंने तुम्हें बताया कि दे आर नॉट टारगेटिंग मिलिट्री मिलिट्री है ही नहीं तो टारगेट किसको करेंगे दे आर टारगेटिंग द सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है कुछ नई न्यूज में जो सऊदी है सऊदी में कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए Saudi Defense Ministry reported intercepting and destroying 10 drones in the eastern region as Iran continuing to target the Gulf energy infra. Right. And the next one is US troops deployment. अभी इसको थोड़ा सा कंफर्म करना बाकी है बहुत रिसेंट की न्यूज है लाइक जस्ट हाफ एन आवर 2 घंटे पहले की but the US is reportedly deploying thousands of additional troops to the region to support the ongoing operation. So there are additional support on ground, additional troops are going to be deployed on it. But इसका डिसीजन अभी like जिस मैंने बोला था हाफ एन आवर पहले की न्यूज है I can find these news at the different Twitter and X accounts, but again, जब तक वो official से नहीं आता तब तक नहीं होता. So there has been many ways war from 2000 to 2025, but this is a war I think everybody is affected as the supply chain is the reason a missile hits Iran and a street vendor in India is paying. That is very correct. इसमें कोई दो राय नहीं है एंड यस सी ओपनली क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को मुझे यहाँ पे बट द प्लेसेस I used to have food and I used to hang around with the people. We are not we are artist kind of people, so we go to the very simple places. They all are complaining about the LPG crisis, right? So even if the government says and even if the things look calm, there is a silent crisis of LPG that is happening. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें जो है वो प्रॉब्लमेटिक तो है ओके सो इसके बाद मैंने मतलब दीज आर द मिलिट्री डेवलपमेंट देन आई गॉट अ रिपोर्ट इन अल जजीरा कि एनर्जी इंफ्रा को कितना ज्यादा डैमेज हुआ है इस पर्टिकुलर वॉर में उसकी बात कर लेते तो फॉर नाउ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है चैनल इज नियरली इम्पैसेबल है ना कि भाई वहां से पास नहीं हो सकते while Iran has allowed selective passage for some ships the prolonged closure causes the global energy crisis also the energy infrastructure is being targeted so जो रीजनल फैसिलिटीज हैं उनकी अगर हिट की बात करें तो कुवैत इज समथिंग कि वो जो अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी है दैट इज बीइंग टारगेटेड लाइक यस्टरडे राइट कतार में जो रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स है उसे डैमेज किया गया है एंड मैं सिंपली से बता दूं अल जजीरा की स्टेटमेंट ये ईरान स्ट्रक द रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियली कटिंग 17% of facility output for several years, says the officials. राइट सो ऑफिशियल जो है राज लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स की उन्होंने ये बात बोली है द अटैक इज सो इंटेंसिव दैट फॉर सेवरल इयर्स 17% of the entire production this is the largest LNG complex in the world दुनिया भर का 20% LNG सप्लाई यहाँ से होता है इंडिया गेट्स 50% ऑफ सप्लाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस राइट तो सेवरल इयर्स के लिए 17% आउटपुट जो है उसको कट करना पड़ेगा दैट इज द
what we can say, damage they are facing. फिर इसराइल को भी ईरान छोड़ नहीं रहा है. सो इसराइल जो है वो हाइफा ऑयल रिफाइनरी में जो है कंटिन्यूअस अटैक ईरान का देख रहा है. ईरान इज कंटिन्यूअसली अटैकिंग ऑन द डिफरेंट ऑयल फैसिलिटीज इन इसराइल एज वेल. सो ओवरऑल फैशन में अगर बात करें तो जो कंक्लूडिव रिपोर्ट में कंक्लूडिव स्टेटमेंट्स थे उसके हिसाब से द प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट halted in all the places in the Middle Eastern oil and energy infra, right? Then the extensive damage of oil refineries and the LNG complex is so intense. If the war stopped today, it will take 6 to 9 months to get the regular supplies we had before the war. तो अगर अभी भी वॉर रुक जाता है तो इंफ्राज में इतना लॉस हुआ है कि 6 to 9 months लग सकते हैं फॉर द रेगुलर सप्लाई चेन टू रीस्टैब्लिश्ड, राइट. इसका एक जो इन्होंने बोला इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि जो यूएसए है, यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो ईरान का ऑयल उसमें है, क्या कहना चाहिए, ओशन में है, उसको वो सैंक्शन से हटा सकते हैं. So they are so desperate. They understand how the oil crisis is being increasing day by day that they are ready to remove sanctions from Russian oils, Iranian oil. So yes, in energy infra को वो हुआ है, damage हुआ है, that is correct, right? So थोड़ा सा casualty reports हैं जो अपन ने 2 4 दिन से नहीं बात की थी तो उसकी बात करें तो Iran has lost most number of people, that is close to 1500 to 2000 people. Last week, this number was 1300 to 1500, but the number is continuously increasing. And the second number, right, is Lebanon, where 1000 to 1200 people lost their life. Lebanon is not even directly in the war, it was Hezbollah. And see, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. US reported 13 US military personnel who lost their life in this particular war. Talking about Indian nationals, so there were 6 Indians who lost their lives in this particular war. है ना. जबकि लगभग 3 लाख Indians have returned home from this particular reason. Yeah, US में 13 US military personnel is a huge number that people are still getting crazy on it. Right? They are not very happy, but India में numbers का कुछ वो ही नहीं है. खैर, आगे की जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट आफ्टर द कैजुअलिटी रिपोर्ट वो ये है कि ईरान रिफ्यूज्ड एनी काइंड ऑफ पीस टॉक और एनी काइंड ऑफ सीज फायर टॉक्स. It's saying कि we have given 3 conditions, follow those 3 conditions the same, accept the legitimate right of Iran, pay for what you did, and उसके बाद फिर हम बात करेंगे. और अब मतलब give us in written that there is going to be no further attack on Iran of any kind. So ये उन्होंने बोल दिया है सीधे तौर पे. Commercial fight between India and Europe have been shrunk to 50 miles wide over the Azerbaijan. तो airspace जो है, whether this it's not a kind of Gulf region, तब भी airspace जो है वो violate तो हो ही रहा है. Hmm. Sir, what is the clause for all open for all policy for the state of Hormuz advised by USA, and it is possible USA might use it? सी यूएसए की जो रिसेंट पर्टिकुलर अपडेट है मैं उसी पे बात कर रहा था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये न्यूज़ देखो, फ्रंट पेज में ही लिखा हुआ है, यू ट्रम्प सेज नेटो एलाइज कावर्ड ओवर द ईरान इशू. सो कल की उसमें 2 चीजें हैं जो आप समझो. जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थी, राइट, शी वाज विजिटिंग अमेरिका एंड यूएस के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बात चल रही थी. तो यूएस प्रेसिडेंट एक्चुअली ह्यूमिलिएटेड, है ना, कि देयर इज अ जर्नलिस्ट हु आस्क्ड कि भाई आपने क्यों नहीं पूछा था, आपने क्यों अपने अलाइज को बताया कि नहीं बताया था व्हाइल अटैकिंग ऑन ईरान. तो ही सेड कि वी वांटेड टू गिव सरप्राइज, एंड हु नोज सरप्राइज बेटर देन जापान, right? And they didn't even told me before attacking on Pearl Harbor, so why should I tell them to attack, like we are attacking on Iran. So हो ये रहा है कि जापान जो यूएस की क्लोज allies हैं, whether that is Japan or other NATO nations, right? America wants a kind of what we can say.
जो वो है क्या कहना चाहिए, अमेरिका जो है वो उस पूरे के पूरे अलायंस को कॉल कर रहा है कि भाई चलो, वी शुड एक्चुअली डिप्लॉय आवर शिप्स सो दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गेट ओपन एंड जो ऑयल क्राइसिस है वो ना हो. Now, oil crisis have stuck Americans as well. तो यूएस की तरफ से ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है, जिसमें वो कह रहा है कि क्लोज फॉर ऑल ओपन फॉर ऑल, है ना, ये थोड़ा सा इसी तरीके से देख सकते हो कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाएंगे तो ईरान विल नॉट वांट कि भैया लार्ज स्केल पे हो, सो ओपन फॉर ऑल हो जाएगा. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट तो वो क्लोज फॉर ऑल हो. टेक्निकली जो है सीन बड़ा सिंपल है. अगर आप ईरान की तरफ से इस चीज को देखो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज दैट पर्टिकुलर चोक जो क्या कहना चाहिए, American muscles, Israeli muscles against it is using in form of economics, and Americans want to counter it using the muscles again. तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है ना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है. क्या कह रहे हो ब्रो, रियली ड्रॉप द वर्ल्ड वॉर? नो, आई मीन ही इज अ डम पर्सन. मतलब आप जो कह रहे हो ना, हु नोज सरप्राइजेस बेटर देन जापान, right? He was actually referring those atomic bombs American drops on the Japanese soil. So it's a humiliation for you guessed कि मतलब आप बात कर रहे हो जापानीज प्रेस प्राइम मिनिस्टर से, who's a lady and who's a very sensible person, जो मैंने उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी हुई है. सो दैट इज समथिंग जो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम जो है समझ में आती है. ट्रम्प इज नॉट एट ऑल अ डिप्लोमेट, राइट? तो ये मुझे मजा नहीं आया, राइट? तो वो देखने में ही समझ में आता है कि हाँ क्या सीन है क्या नहीं है. अब टॉकिंग अबाउट द अदर पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से सेटअप्स, जो मतलब अदर जो वो हुए क्या कहना चाहिए, डेवलपमेंट हुए उसमें यूएस की तरफ से जो $200 बिलियन का वो था, कांग्रेस से जो डिमांड थी पेंटागन की कि ईरान वॉर के लिए, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दैट इज गोइंग टू बी कैंसिल, right? Yes. And major NATO allies, they decided not to get involved into that particular operation. Their personal benefit जो है, oil energy benefit, energy security is associated with it. तो might be we saw something जो कि यूएस की तरफ से क्या होगा, एक ऑफेंसिव उसमें हो जाएगा. बट मैं बहुत ज्यादा कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट के उसमें नहीं हूँ उम्मीद में कि ऐसा कुछ होने वाला है. Getting, so that is what is happening. नो, हाँ तुम कह सकते हो, वोलोदोमिर जेलेंस्की या जेलेंस्की के साथ तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था. आई मीन लुक एट हाउ द टाइम टर्न्स. मतलब भाई एक तरफ तुम जेलेंस्की के मजे लेके चले गए, उसको व्हाइट हाउस में बुला के बेइज्जत करते हो, एंड द मोमेंट यू एंटर्ड इन इराक वॉर, like in just 2 weeks you are asking help from Ukraine that how you are countering the drone attacks, you can help us, right? तो ये है मतलब अमेरिका कितना ज्यादा मशहूर है कि मतलब मजबूर है कि यूक्रेन जैसी कंट्री विच इज लाइक ऑलरेडी बीइंग अफेक्टेड बाय द वॉर, उससे वो हेल्प मांग रहा है. सो यस, द Iranian are not going to win the war, that is for sure. But these particular strikes, these particular retaliation, these particular protest or resistance against the US and Israeli muscles, this is going to challenge the US might in for centuries. मुझे नहीं लगता कि इस वॉर के खत्म होने के बाद यूएस को एज अ सुपर पावर देखा जाएगा, है ना, क्योंकि द काइंड ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट इट इज फेसिंग, वी ऑलरेडी हैव अप्रोक्सीमेट $40 trillion ऑफ डेब्ट एंड कंटिन्यूस वॉर स्पेंडिंग जस्ट बिकॉज इजराइल वांट्स इट, ये उनको काफी भारी पड़ेगा, राइट? वॉर में तो कोई नहीं जीतता, तुम्हें हाँ बताने की जरूरत नहीं है कि नोबडी विंस द वॉर. खैर, दैट वाज द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट. अब थोड़ा सा सीजीआई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी बात कर लेते हैं. सो यस्टरडे जो हमारे वो हैं सीजीआई हैं, जस्टिस सूर्यकांत, ही क्या कहना चाहिए, लाइक काइंड ऑफ recused कि भैया हम इस particular petition where the challenge between Chief Election Commissioner and other Election Commissioner Act 2023 is being challenged, citing conflict of interest since the case
क्वेश्चन वेदर सीजीआई शुड बी ऑन द सिलेक्शन पैनल और नॉट। तो उन्होंने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर उसका पार्ट नहीं रहूंगा। राइट, आप लोग देख लीजिए। सजेशन फ्रॉम एडवोकेट प्रशांत भूषण कि द केस विल बी हर्ड बाय अ बेंच with no judge in line for the chief justice position with the next hearing on the 7th of April. So what exactly happened, हम उसकी बात करते हैं। हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, these are the posts of the supreme election officers of India. Now, from the very first, what we can say, Lok Sabha, and even from the very first 1947 to 52 वाले टाइम की अगर बात करें, the chief election commissioner was appointed by the president with the suggestion of a cabinet. The rule was, the motive was, until a new system is being created, this will be our system. So, new system को create करना था, that is correct. But starting from 1947 to now, there was no new system that was created. This practice was continuous, where government suggests some name, the president accepts those names, and sign the order, and they appoint the chief election commissioner. So when this particular practice was challenged in the Supreme Court की तरफ से एक judgment आया कि yes, that is correct, that we were supposed to develop a new system, new practice for the selection of chief election commissioner and election commissioners. So until and unless a new law is being made by the cabinet, by the parliament, there will be a high-powered committee, right, in which we will have Chief Justice of India, the Prime Minister, and the leader of opposition, right? They will choose the candidate for the Chief Election Commissioner and Election Commissioners. So ये जो high powered committee थी, that was only eligible until and unless we are creating a new law. So वही हुआ जो होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो इमोशनल हो गई, राइट, कि आज लॉ तुम्हारा भाई बनाएगा। एंड दे मेड अ लॉ इन विच दे क्रिएटेड अ कमिटी which will have PM, a cabinet minister, right, and a leader of opposition. They will be the one which will choose the chief election commissioner and election commissioners. Now, if you look at the system, look the committee, right? The majority belongs to the government. The government is like government, prime minister and prime minister के cabinet से एक minister. Who is going to defy the prime minister? मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलेंगे कि ज्ञानेश कुमार नहीं, शुभम द्विवेदी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, तो कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जो मना कर देगा कि नहीं सर, शुभम द्विवेदी सिर्फ एक टीचर है, ज्ञानेश कुमार इज अ renowned and क्या कहना चाहिए, respected administrative officer, very experienced, very independent, non-biased. Shubham Dwivedi might get biased. He is a simple human being. So क्या कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को के ऑर्डर को डिनाई कर पाएंगे? द आंसर इज नो। सो यहाँ पे भी जो मेजोरिटी है, जो वोटिंग राइट है, वो यहाँ पे चले जाते हैं। सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कोई पावर्स बचते ही नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर लॉ वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो लॉ है, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, और ये जो है ये नहीं बनना चाहिए। तो चूंकि दे वांटेड सीजेआई बी विद पर्टिकुलर पैनल, जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बोला कि अगर मैं रहूंगा तो ये कहीं ना कहीं बायस हो सकता है। सो नॉट ओनली बट एनी जज हु इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम में से कोई भी इस पर्टिकुलर डिसीजन को, इस पर्टिकुलर केस को नहीं सुनेगा, राइट। दैट्स, आई होप ऐसा हो। खैर ठीक है, राइट। सो चलो बात करते हैं कि क्या सीन है। सो 2023 में वही मैंने बोला ना कि जो यूनियन मिनिस्टर है, जो बैकग्राउंड जो है, जो सिलेक्शन पैनल है, जो पिटिशन है, वो ये कह रहा है कि वो जो यूनियन मिनिस्टर है, दैट इज बीइंग सपोज टू रिप्लेस बाय द सीजेआर। तो अभी इस पे बात चल रही है, कोर्ट में रूलिंग है। एंड जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एडीआर, एंड जया ठाकुर है, जया ठाकुर इज द आई गेस सेम जिन्होंने वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, जो ये मेंस्ट्रुएशन राइट्स के लिए जो लड़ाई करती है, ये वो लॉयर है। इन्होंने बोला है कि देयर शुड बी अ न्यू लॉ अंडरमाइनिंग द इलेक्शन कमीशंस इंडिपेंडेंस। सो अगर प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे, तो फिर वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा? दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट।
यार ये तुम लोग ना मजे मजे में मेरे से बातें निकलवा के ना मेरे ऊपर यूएपीए लगवाओ। खैर, लेट्स कम बैक। जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उनकी बात करते हैं। दे वांट्स टू मेंटेन द पैनल्स इंडिपेंडेंस डज नॉट रिक्वायर द जुडिशियल मेंबर। उनका ये कहना है कि पैनल की इंडिपेंडेंस जो है वो जुडिशियल मेंबर की उसमें जरूरत नहीं है। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट जब ये केस चल रहा था, during like when the judgment of high powered committee came, उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट ये था, द पावर जो सेपरेशन है बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, है ना। सो वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो लेजिस्लेटिव का पावर है, ना कि जुडिशरी का। सो दैट इज द रीजन जुडिशरी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। बट अभी वो चैलेंज है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता, राइट। तो अभी इस पे बात होनी चाहिए, एंड आई थिंक द रूलिंग विल बी इन फेवर ऑफ पिटिशनर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको एविडेंटली दिख रहा है कि द कमिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी, इट इज बायस्ड ऑलरेडी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें सही तरीके से मिले। नाउ टॉकिंग अबाउट सीएपीएफ बिल 2026, राइट। नहीं भाई, आई एम हैप्पी विदाउट बीइंग पॉलिटिकल, है ना। नहीं चाहिए मेरे को पॉलिटिक्स। I'm happy being discussing things with you guys, right? मैं वहां जाऊंगा तो वहां कुछ नहीं कर पाऊंगा। So let's talk about it. The Central Armed Forces General Administrative Bill 2026 is a proposed piece of legislation aiming at codifying the services, conditions, and leadership structure within the Indian parliamentary forces. So CAPF के लिए जो कोडिफाई करना है सर्विस कंडीशंस, लीडरशिप स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों के लिए ये बिल लाया गया। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात कर लेते हैं जो मैंने नोट डाउन किया पीआरएस से। तो सबसे पहले तो बात ये है कि उन्होंने बोला यूनिफॉर्मिटी। किसकी बात की उन्होंने? यूनिफॉर्मिटी की बात की। सो द प्राइमरी गोल इज ऑफ द बिल इज टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर 5 मेजर सीएपीएफ्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसपी। सो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एंड एसएसबी दैट इज सशस्त्र सीमा बल। इन सब के स्ट्रक्चर में, इन सब के फ्रेमवर्क में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दिस पर्टिकुलर बिल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, राइट। दी कोडिफिकेशन ऑफ आईपीएस डेपुटेशन, इसकी बात करता है वो। मैं बता देता हूँ क्या कहानी है petition. So the bill seeks to formalize that a reservation of senior level post for IPS, that is Indian Police Service Officers. Specifically, it proposes 50% of Inspector General IG level post from the IPS, 20% Deputy Inspector General DIG level post from the IPS, and 67, like at least 67% ADG, Additional Director General posts, and all Special Director General posts, Director General posts to be all IPS officers from the deputation. So कुल मिला के मैं कहानी समझा रहा हूँ। CISF हो, CRPF हो, या अदर पर्टिकुलर फोर्सेस हो, जो भी पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं, they have their own set of Director General and other people. So this particular bill wants IPS officers, Indian Police Service officer, to put them in the deputation of those particular leadership posts. तो उसमें 50% of IGs, 20% of DG, DIGs, 67% of ADG and special SDG जो होते हैं, Special Director General and Director General, उनकी पोस्ट के लिए आईपीएस रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, विच इज समथिंग जो कि लोग जो है उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑपरेशनल रैशनलिज्म जो है उसकी बात करें, द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट आईपीएस लीडरशिप is essential for maintaining effective coordination between central forces and state administration, which is critical for national security and anti-insurgencies operation. उनका ये मानना है कि the IPS officer can be the bridge between the force and state police and state administrative administration, जिससे जो इंसर्जेंसीज हैं, जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना। सो आईपीएस के लिए उन्होंने वो किया। द यूनिफॉर्म सर्विस रूल, इट एम्स टू रिप्लेस ऑल द currently fragmented regulatory framework with consistent rule of for recruitment, deputation, and promotion.
सो वो चाह रहे हैं कि जो एक यूनिफॉर्म रूल बुक बन जाए, है ना, जिसमें अपॉइंटमेंट हो, डेपुटेशन हो, प्रमोशन हो, रिटायरमेंट हो, ये सारी चीजें जो है एक ही बुक में एक ही तरीके से डील हो, ना कि अलग अलग तरीके से। ठीक है। अब कहानी ये है, जो लास्ट ईयर मई 2025 में जब ये आया था, तब से इसके अगेंस्ट काफी चीजें जो है नेगेटिव हुई हैं। राइट, कि भैया ये क्या है, तुम फोर्सेस में पुलिस वालों को ये वो डेपुटेशन लीडरशिप, हाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बॉर्डर रेगुलेशन एंड अदर थिंग। वी आर नॉट सेइंग कि जो आईपीएस ऑफिसर्स है दे आर नॉट केपेबल इनफ, बट व्हेन इट कम्स टू द सिनेरियो, है ना, कि भाई बॉर्डर में क्या इंसर्जेंसीज इंट्रूजन चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज मैस। सुप्रीम कोर्ट had previously ordered the Ministry of Home Affairs to progressively reduce IPS deputation up to the rank of IG within 2 years, affirming that CAPF cadre officer are part of the organization Group A service. सो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पर्टिकुलर सीन थी कि जो आईपीएस ऑफिसर्स डेपुटेशन में उन्हें रिड्यूस किया जाए। ये सीपीएफ कैडर जो है, दे हैव देयर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस, दैट इज ओजीएएस, है ना, दिस इज अ टर्म ओजीएएस। दे वांट कि ये जो ओजीएएस है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस, उसको क्या करें, डेपुटेशन की जगह रखें, दैट इज गोइंग टू बी मेड कंसर्न। फिर उन्होंने जो कैडर कंसर्न है उनको भी नहीं सोचा। CAPF cadre officer and veteran have expressed strong opposition, arguing that the bill negates the judicial victory they achieved after years of litigation. They claim that it institutionalized the career stagnation for nearly 13,000 cadre officers who often faces delayed promotion due to the reserve senior position. तो जो कैडर है जो सीएपीएफ का, उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट बात की कि यार हमने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे तैसे जीता, उसके बाद देर आर 13,000 पर्सनल हु आर वेटिंग फॉर द प्रमोशंस, एंड इफ वी गेट दिस पर्टिकुलर बिल उनके प्रमोशन और डिलेस हो जाएंगे। एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो कंसल्टेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं कि यू आर मेकिंग अ बिल विदाउट कंसल्टेशन, सो यू वी नीड दैट पर्टिकुलर, यू नीड दैट कंसल्टेशन, यू नीड दैट अप्रूवल फ्रॉम अस, उसके बाद वो करेंगे। और जो इवेंट्स हुए उसमें ये है कि यूपीएससी ने अभी सीएपीएफ के जो असिस्टेंट कमांडिंग पोस्ट है उसके लिए वो निकाल दी है, एग्जाम जो है जुलाई में होना है। देर इज अ बजटरी एलोकेशन ऑफ सीएपीएफ जो कि 1,16,789 है 26-27 फिक्स के लिए, सो 1,16,789 करोड़। तो लाइक इवन लाइक बिफोर दीज पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स एंड अदर थिंग, उन्होंने बजट भी एलोकेट कर दिया। उन्होंने, सरकार ने क्या किया हुआ है, नोटिफिकेशन जारी किया न्यू ज्वाइनिंग के लिए, कमांडेंट एंड बाकी चीजों के लिए। सो है, बहुत जल्दी जल्दी में चीजें हो रही हैं, तो सीएपीएफ बिल इज गोइंग टू क्रिएट अनदर पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी जो चल रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम मेजर न्यूज, तो भाई सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रिजेक्ट ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ऑन गाजा वॉर। क्यों? आई डोंट नो। मतलब ये छोटी सी बच्ची की कहानी है, 5 year old पैलेस्टीनियन गर्ल की हु वाज किल्ड बाय द इजरायली फोर्सेस इन 2024 इन गाजा वॉर, और उसको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, बट सीबीएफसी कह रहा हम नहीं दिखाएंगे। मुझे नहीं पता क्यों। सेंट्रल रेजेस द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, प्रीमियम पेट्रोल एंड इंडस्ट्रियल डीजल। ठीक है, सो ध्यान रखना भाई साहब, जल्दी से अपने यहाँ भी होने वाला है। मतलब अभी फॉर नाउ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो नहीं हो रहा है, बट हो रहा है। तैयार हो जाओ, इलेक्शन के बीच में पेट्रोल प्राइस बढ़ा है। मैंने बोला था गवर्नमेंट ब्लॉक्स 300 प्लस गैम्बलिंग एप्स, इन टोटल दे हैव बैंड 8400 गैम्बलिंग एप्स, कैन यू इमेजिन? राइट, सो दैट मींस सिंपली कि जो मेजर प्लेयर्स थे इस बार आईपीएल खेलने वाले, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 में टीम बनाने वाले, इस बार नहीं खेलने वाले। इस बार तुम्हें लाइक सैडली सिर्फ धोनी, कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इन्हीं को देना पड़ेगा। एंड दे प्रमोट केरला स्टोरी। वंस अ वाइस मैन सेड हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलो पॉइंट पे आते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिव्यूज फार्मर लॉस अमिड द एडवर्स वेदर कंडीशन। सी टेक्निकली तो मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आई रिस्पेक्ट शिवराज सिंह चौहान, बट इनके एक स्पीच है अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में वायरल हो रहा है,
उसमें उनका ये कहना था कि नेहरू जी ने अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में, लाइक टाइम पीरियड में, he just mentioned 6 or 7 times about the farmers from the Red Fort. Modi ji has mentioned more than 200 times. So Modi ji is more concerned about farmer than the क्या कहते हैं पंडित नेहरू। तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया लॉजिक इनका कि सिर्फ नाम लेने से अगर ऐसा होता तो जो किसान सभाओं के अध्यक्ष होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनसे अच्छा तो किसानों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। तो वट एवर दे आर सेइंग यू शुड हैव लाइक अलाउ इट। खैर ठीक है, भाई मत याद दिलाया। धुरंधर तो तू तो अलग ही घटिया लेवल पे पहुंच गई है यार। क्या ठीक है। डू स्टेप मेडिकल केयर पेंशन सपोर्ट पार्ट ऑफ द ममताज प्रॉमिस। सो भैया तृणमूल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया फॉर द इलेक्शन। जल्दी जो है वो बीजेपी भी जारी करेगी। राइट। ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म रिजेक्टेड, बात कर ले। फॉर्मर एससीजे सीनियर एडवोकेट जॉइंस द पैनल टू गाइड द एनसीईआरटी करिकुलम। नाउ क्या कहना चाहिए, वो जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने बताया है कि भैया जो वो है सीनियर एडवोकेट हैं, सम अदर पीपल, दे आर जॉइनिंग पैनल फॉर द गाइड ऑफ एनसीईआरटी करिकुलम। सो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमारा करिकुलम क्या होगा, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, चलो। सो रिन्यूएबल वर्सेस चेंज, है ना। ईस्ट द्रविडियन अलायंस बेट्स दैट द टीवीके विल हर्ट द ऑर्डर। सो यहाँ पे जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है जो साउथ में चलती है उसके बारे में बात की गई है। इंडियाज ईरान स्टांस डज फ्यूल अ फॉरेन पॉलिसी डिबेट। दैट्स अ करेक्ट थिंग। मैंने बोला था ईरान के अगेंस्ट जो पर्टिकुलर स्टैंस इसराइल के सपोर्ट में जो स्टैंस लिया गया, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट, दैट इज गोइंग टू हिट इंडिया हार्ड, एंड दैट इज हाउ। खैर, एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, आई टेल यू जस्ट। गल्फ ड्रीम टर्न्स सोर फॉर द कॉनसीमा वुमन। ये एक बार पढ़ना, इसमें तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। और दूसरा, कुकिंग गैस क्राइसिस ऑन द बॉयल। ये भी पढ़ना है कि क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, किस किस तरीके की चीजें चल रही हैं। गेटिंग ओके। नाउ ये एक कंट्रोवर्शियल न्यूज थी जो मैं चाहता था कि मैं बात करूं। आई मीन बेंजामिन नेतन्याहू, कहीं ना कहीं ये समझ में तो आ ही जाता है कि दैट हेट्रेड बेस्ड ऑन रिलीजन बिकॉज ही इज अ ज्यू, राइट, कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाता है। सो इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस ही मेंशन्ड दैट जीसस हैव no what we can say power. Jesus is powerless in front of the Genghis Khan who is having an army. Right. So this was something. This was a remark that was something जो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट था। उसने ये बोल दिया कि भाई साहब, जीसस हैड नो एडवांटेज ओवर जंगिस खान, राइट। एंड दिस इज समथिंग जो कि गलत है। आई मीन जीसस जीसस क्राइस्ट इज अ रिलीजियस फिगर, a respected figure in Christianity. On the other hand, Genghis Khan was a cruel dictator and invader. राइट। सो पीपल आर एक्चुअली कॉलिंग इट रॉन्ग। और इसराइल को भी पता है कि अगर अमेरिकन एंड क्रिश्चियन सपोर्ट्स कम हो गए तो भाई साहब उसको किसी दिन भी बैंड बजाया जा सकता है। सो नाउ नेतन्याहू इज क्लेरिफाइंग कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वो है, राइटर है, उसने बोला कि मैं इस राइटर को कोट कर रहा था, दैट इज नॉट माय पर्सनल थॉट वगैरह वगैरह। खैर, अनदर न्यूज है ना, श्रीलंका रिफ्यूज्ड ground access to US warplanes, say Desanka. Yes, Sri Lanka refused permission for the United States for its warplane to be there in the civilian airport. उसने बोला नहीं भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, आपको कहीं और रखना है रख लो। So श्रीलंका is taking a stand in the war, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। Abu Dhabi arrest over 100 people posting the misleading information of the war. Haslo, it's a good joke. Right, Israel says Iran decimated and Mustafa vows to fight on. That is continuous. And Iran and Americans in the morning they said we have destroyed the air force of the Iran, we have destroyed the missile capacity of the Iran, we have destroyed the leadership of the Iran. Iran has nothing. Iran is lost. और शाम आते आते these are the people who are asking help from their allies कि जहाज भेज दो, ट्रूप्स भेज दो हमारे साथ so that we can get out of the situation, है ना। ये कंटिन्यू चलता है। ठीक है। Trump calls NATO allies cowards over the Iran issue.
मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे ये, मतलब अब टेक्निकली वी डोंट नीड नेटो, क्योंकि हमारे पास वो रशियन एग्रेशन नहीं है जो सोवियत एग्रेशन था। एंड ट्रम्प इज गोइंग टू डू इट। ट्रम्प को पता है, सबसे तुम्हें पता है, ट्रम्प बहुत समझदार आदमी। He knows that the most expensive alliance that Americans have made is NATO. It's costing them more. So they want कि भैया हम नेटो से अलग हो जाए। सो ये ईरान वीरान पे वॉर करना, अटैक करना, दैट इज समथिंग जो कि just these are the excuse so that it can actually dismantle NATO. It can get out of the NATO. Okay. Hollywood legend, yeah, right? Chuck Norris, a Hollywood tough guy. He dies at 86. All right. Yes. Mm, okay. Mm. Chuck Norris was a Hollywood legend, kickboxer. He's a Hollywood star. इसने कई फिल्मों में काम किया हुआ है, right? And there was a time when Chuck Norris के लिए बहुत सारी memes भी बने. But the legend we had, now we lost him. He's no more. हाँ, the politics of martyrdom, sacrifice and vengeance in Iran, body politics. ये तो खैर कंटिन्यू शिया कम्युनिटी में तो होता ही है. The war in Iran raises pressure on Ukraine while Russia prepare new offensive. देखना कहीं ताइवान नहीं आ जाए न्यूज में साइड से कि हम भी हैं. Okay, so this was it for today's newspaper. राइट, जो मेजर डिस्कशंस थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे फॉर आवर लाइक थिंग्स, वो सब कंप्लीट हो चुका है. आईपीएल में डिस्कस नहीं करने वाला कि गुजरात टाइटन के पास क्या बेनिफिट है,